आओ देखें क्रिकेट टीवी। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। हम लौटे हैं कुछ दिनों के बाद एक नया क्रिकेट का सीरीज लेकर। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया आर द करंट चैंपियंस, उन्होंने इंडिया को डिफीट किया था। तो करते हैं इसके बारे में बात। ओवर टू यू निखिल सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अबाउट दिस क्रिकेट सीरीज? And it's good to be back on the show. I think it's been a break after the IPL, यस। and celebrations were all over the place, and good for Bengaluru to win after such a long time. So we're now actually the real thing. The World Test Championship, which determines who is the best test playing nation in the world. ये 2 साल में एक बार होता है। और पिछली बार 2023 में हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया था 203 रन से। और ये मैच होता है हमेशा इंग्लैंड में, बिकॉज दैट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ क्रिकेट, राइट? दैट इज वेयर क्रिकेट इज सपोज टू हैव बीन बोर्न। जहाँ पे क्रिकेट पैदा हुआ था वो था लंदन, इंग्लैंड। और वो लॉर्ड्स जो है is supposed to be the temple of modern cricket. So the match is being played at Lords, and Lords has its own, unique nature. I've seen the match there before. I don't know whether you ladies have got the chance, but वहाँ का जो माहौल होता है लॉर्ड्स का, जहाँ पे जहाँ क्रिकेट जहाँ जैसे खेला जाता है, इट्स अ वेरी जेंटलमैन्स गेम। तो मुझे याद है, मैं शायद 12-15 साल पहले गया था जब इंडिया और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच था, और पहले दिन गया था मैं, पहले दिन के फर्स्ट हाफ में गया था। और पहले 1-2 विकेट गिरने के बाद जब सचिन तेंदुलकर खेलने को आए, तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और ताली मारने के लिए, ब्रावो सचिन, वेलकम सचिन, ऑल द इंग्लिशमैन गॉट अप। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी जेंटलमैनली गेम देयर। आफ्टर अ गुड शॉट एवरीबॉडी सेज ब्रावो, वेल प्लेड। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे इंडिया में हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वहां पे वो थोड़ा और फॉर्मेलिटी होता है। लोग सूट बूट में आते हैं, वाइन पीते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट स्नैक्स लेते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट feeling when you go to Lords, and so the World Test Championship is being played over there. And I don't know whether it's a very unique thing. In between overs, you cannot get up from your seat and move, because then you're disturbing your fellow people who are watching the game. So you're asked to sit down. Mobile phones are not allowed. You can't speak on the phone, and अच्छा। you can't get up between overs. So अगर आपको रेस्ट रूम यूज करना है या कुछ पानी पीने जाना है, तो आपको ओवर एंड होने के बाद, जब दूसरा ओवर शुरू होने के पहले, तब आप जा सकते हो। और वापस आने के लिए भी रुकना पड़ता है। जब ओवर खत्म होता है तब आप वापस आ सकते हो। तो ये एक जो प्रोटोकॉल है, एक जो माहौल है लॉर्ड्स का, वो बहुत ही अलग होता है, और ये यहाँ खेला जा रहा है। और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम बिल्कुल ही टक्कर में है। और दोनों टीम के जो कप्तान है, पैट कमिंस और नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं देख लेता हूँ साउथ अफ्रीका के कप्तान का नाम। हिज नेम इज तेम्बा बबूमा। तो तेम्बा बबूमा कैप्टन है। और दोनों खेल रहे हैं आईपीएल में। हमने इंडिया में उनको काफी देखा हुआ है। और खास करके इंटरेस्टिंग ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद 4 प्लेयर्स हैं जो यहाँ खेल के गए हैं। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉन हेजलवुड। ये चार यहाँ पे खेल के गए। जॉश हेजलवुड, ये चार खेल के गए यहाँ पे अभी अभी फिलहाल, हाल फिलहाल आईपीएल Josh में। Inglis as well. Well, Josh was part of the Bengaluru team that won, and people call him Hazel God over here, not Hazelwood. But I don't think that Hazel God name is going to get transmitted to Australia. But that's and 6 South African players were here: Markram, Rickelton, Beuma himself, Tristan Stubbs, Marco Jensen, Kagosa Rabada, Luingo Nagiri. So a lot of players have already got been here, played the matches, and are in good match form. So it's going to be a great match. And I think for India, a lot of familiar players there. Who are going to be part of this championship. Australia has Usman Khwaja and Labuschagne at the top, the openers. Labuschagne is a fantastic batsman. I don't know how many of you have watched him. I mean, the two of you and the viewers, but he's a fantastic player. And if you watch him playing, he's one of the best opening batsmen today, probably in the world. Cameron Green makes a comeback. He was part of the Mumbai Indians for a few years, and I think he missed out this season. Steve Smith is there, the veteran
who has been part of the team for so long. He was a captain for some time before he handed over the reins to Pat Cummins. Travis Head is there. B. Webster is a all-rounder who comes in. Alex Carey is a wicket-keeper batsman. Great batting also, apart from good wicket-keeping. Pat Cummins, we all know, he was captain of the SRH in the IPL. Mitchell Stark played for Delhi. Nathan Lyon did not come this season, but a great spinner. And of course, Josh Hazelwood. That makes up the 11 for the Australians, and good bowling combination. I think Hazelwood, Stark, and Cummins make a good pace attack. And I'll give you one statistic in Lords. ये जो अगर आप पिछले 2021 से लेके आज तक अगर 5 साल का आप स्टैटिस्टिक लेते हैं तो 90% ऑफ द विकेट्स एट लॉर्ड्स आर टेकन बाय पेसमैन, यानी स्पिनर्स के लिए बहुत जगह नहीं है वहां पे। सिर्फ 10% के जो विकेट गिरे हुए हैं लॉर्ड्स में पिछले 5 सालों में, ये लिए गए स्पिनर्स ने, और ज्यादातर पेसमैन ही खेलते हैं, और खास करके राइट हैंडेड पेसमैन। तो अब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन में अगर देखते हैं तो राइट हैंडेड पेसमैन ने 70% विकेट लिए, 20% लेफ्ट आर्म ने लिए, बाकी 10% स्पिनर्स ने लिए। तो यहाँ पे आपको जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक और एक स्टैटिस एक एक, एक ट्वीक है ये कि दो तरह के बॉल होते हैं। एक तो कुकाबुरा बॉल जो साउथ अफ्रीका में खेला जाता है, और एक होता है जो लंदन इंग्लैंड में एक बॉल होता है, वो उसका नाम मैं बताऊंगा शॉर्टली, वो खेला जाता है। ये रेड बॉल जो होता है, तो ये इंग्लिश वाला बॉल से खेला जाता है, जिसका शाइन जो है वो ज्यादा टाइम रहता है, और फिर जो सीम होता है वो सीम निकलने को टाइम लगता है, तो ज्यादा स्विंग होता है और ज्यादा सीम होता है। इसीलिए इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर right arm bowlers who come and bowl and have a certain element of being able to use the seam very well to swing the ball. So that is why in Lords batting is not easy. बैट्समैन जब आके खेलते हैं तो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल काफी स्विंग होता है और सीम होता है। तो उस वजह से जो बैटिंग जो स्किल होता है, वो बैटिंग स्किल के लिए ये कुछ जो स्पेसिफिक बैट्समैन है उनका उनका वहां पे आना बहुत जरूरी होता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव फैंटास्टिक players coming up front who can play that type of bowling. And this bowling on the South African side also, you got a formidable lineup with Nangidi, Lungi Nagidi, Kagiso Rabada, Marco Jensen, who played in the IPL, and on the spinning side, you have Keshav Maharaj. There's going to be a great, I think, great matchup between two very good test playing nations. Strong batting, strong bowling, playing at Lords, great atmosphere. I think it's going to be raining also a bit. There's going to be cloud cover. Where I'm in New York, it's raining now, and I think it's also in London. Europe is also experiencing a bit of this type of weather. तो इस तरह से जब क्लाउड कवर होता है तो ये सारे जो बॉलर्स होते हैं इनका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। पृथ्वी, आपके क्या राय है? क्या व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस मैच? It's going to be a great match, like I think they crossed each other in 2018 last, and that was quite a scandalous affair, but that went, and for South Africa, I think ICC Championships hasn't been very like on a good side, but this year things are changing for everybody, so I think they have a chance in that sense. Maybe planetary, places placements are better for them this year. But yeah, like you said, pace versus pace. Mitchell Stark, Josh Hazelwood, Cummins versus Rabada, Nigidi, and Jensen. That will be a great matchup. And it will be bowlers, day, because we don't really see shots playing in test crickets. These are very slow, very cultured, very, proper gentleman's game is what test matches. At Lords, while Rabada did not have a great IPL this year, we didn't see him, but I think at Lords he has great statistics, 13 wickets in 2 tests. That looks good, on him, and that looks good for South Africa. I will be rooting for South Africa. I have been since a while now. So I mean, yeah, on paper Australia looks good, but then again, South Africa deserves this win. They're called chokers, and they need to, give that away. They need to give that back.
So yeah. Yes. I agree that that label of chokers has to go, and they have been choking at various forums, not just the test matches. I think Yes. even in ODIs and T20s, and sometimes it's the rain that has robbed them of their rightly due. But then a lot of allegations about match fixing when Hansi Kronia was the captain. But all that's, I think, in the past, and I think this team is just a brilliant team that's out there. And I guess supporting South Africa makes sense because they have played percentage cricket. Australia has played well, but I think somewhere along the line they haven't beaten every team, and India also 2 years back could beat them with almost a second grade team when our Yeah. top players were not there. So South Africa is seems to be in top pole position. One interesting fact is that they have this is the first time that they're playing at a neutral venue after 1912. So the last time that South Africa and Australia played against each other, not with other teams, was in 1912. So you can imagine the history. And they played at Lords in 1912, and that was when there was a tri country, England, South Africa, and Australia. For the first time, there was a three nation टेस्ट टूर्नामेंट इन 1912 में. और 1912 के बाद पहली बार 2025 में ये दोनों टीम अब न्यूट्रल वेन्यू पे वो भी लॉर्ड्स में खेल रहे हैं. लॉट ऑफ हिस्ट्री, लॉट ऑफ इतिहास, बहुत ही इतिहास है इसके पीछे. और जो लोग लॉर्ड्स जाने का जिसके जिसकी खुशनसीबी है वहां पे बैठ के ये मैच देखने का, दे आर truly privileged, I think, and it's going to be a fantastic matchup. South Africa has played at Lords twice in the last 5 years, and they won one game, they lost one. Uh, Australia has played three matches, won two, and drawn one. So Australia has a better track record at Lords than South Africa, and I think Australian players also have played a lot in England. So Steve Smith, for example, has got some 28 matches out, test matches in England out of the 117 that he has played. So a lot of experience comes in with the Australian players. तो क्योंकि वहाँ के जो कंडीशंस है लॉर्ड्स की, ये बहुत ही डिफरेंट है. क्योंकि एक ही दिन में आपको चारों मौसम मिलते हैं. सुबह धूप होगा, 2 घंटे बाद बारिश होगा, 3 घंटे बाद ठंडी होगी, और फिर 1 घंटे के बाद फिर गर्मी होगी. तो आपको चारों मौसम जो है वो एक ही दिन में दिखने को मिलता है. और जब आप जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो जो जो गेंद जिस तरह से मूव होता है वो भी बदलता है, और Yeah. पिच का जो रवैया होता है वो भी बदलता है. तो जब धूप होता है, पिच ड्राई होता है, तो आप अच्छे शॉट मार सकते हो. जब बादल होते हैं, जब बारिश गिरता है, तो पिच थोड़ा स्लगिश हो जाता है, आउटफील्ड स्लगिश हो जाता है, तो बैटिंग मुश्किल हो जाता है, बॉलिंग आसान हो जाता है. तो ये सारे जो एक ही दिन में आपको सारे मौसम देखने को मिलते हैं, तो आपका जो स्किल है, आपका जो बैटिंग स्किल है, इज पुट टू टेस्ट. योर फील्डिंग स्किल्स आर पुट टू टेस्ट, योर बॉलिंग स्किल्स आर पुट टू टेस्ट. सो आई थिंक ये इंग्लैंड का एक खास ये है कि एक ही दिन में आपको चारों मौसम देखने को मिलते हैं. प्रिया जी, आपने तो काफी मैचेस देखे होंगे. आपका आपका फेवरेट टीम कौन है? सर ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक बहुत बेहतरीन टीम प्रिया है. जी, ऑस्ट्रेलिया Yeah, Australia. Between जी. South Africa and Australia, if I have to Paper, say it's a great Australia team. anytime, yeah. Yes. Yeah, I think there's a sort of, if you do a man-to-man matchup, they're pretty okay because I think they have firepower on both the sides. So if you have Josh Hazelwood this side, you have Rabada that side. If you have a Stark this side, you have a Lungi Nagiri that side. If you have a Leon this side, then you have a Keshav Maharaj that side. So it's a sort of a matchup, I think, which is a great matchup. There's no lopsidedness to the team, and I think that's why it's going to be a great innings. I think the team batting second, if statistics show, have not been able to chase. So the team bowling last has won most of the matches at Lords, because I think as the pitch progresses, it breaks up and it's difficult for people to play the fourth innings, which is why they say that at Lords, if you win the toss, you must bat first, so you don't bat fourth. एंड तो जो टेस्ट मैचेस नहीं देखते ज्यादा, उनको जानना जरूरी है कि ये मैच 5 दिन के लिए खेला जाता है, और पांचों दिन की थ्रू 5 दिन में मिनिमम आपको पर डे 90 ओवर्स बोल करने पड़ते हैं. ये कानून है. तो इस ये कानून की वजह ये है कि आपको अगर रन आपको चेस कर रहे हो स्कोर, तो और अगर आप स्लो ओवर रेट डालते हो, तो एक दिन में आप 80 ओवर भी डाल सकते हो, 70 ओवर भी डाल सकते हो. तो जो रेगुलेटर्स है उन्होंने फिक्स किया है कि एक दिन में मिनिमम 90 ओवर डालना जरूरी है. तो ये
ये 90 ओवर को तो यू कैन पेस योर इनिंग्स नोइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी 90 ओवर्स बोल्ड। तो ऐसा नहीं है कि 5 बज गए तो डेज प्ले इज ओवर। यू हैव टू इंश्योर दैट योर quota of number of overs is over, so the the play gets extended beyond the playing hours, so beyond 5 o'clock, if 90 overs have not been bowled on that particular day. So 5 days, great. I think it's going to be a great matchup. Hopefully the rain will not play spoil sport, and we won't have loss of playing hours, or uh, the match being curtailed because of that. But World Championship, great players out there, and I think our youngsters who want to watch and learn, क्योंकि ये एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच इस ऐसे ऐसे माहौल में खेल सकते हैं, ऐसे प्रेशर में आपको खेलना है, तो किस तरह से खेला जाता है, कप्तानी कैसे करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, बैटिंग कैसे किया जाता है, जब अलग अलग मौसम का जो रुख बदलता है तो उस वक्त कैसे आप खेलते हो, ये देख के सीखना बहुत जरूरी है। एंड सो इट बी great entertainment, but also great education for our youngsters who are aspiring to be either cricketers or cricket commentators or great followers of cricket. So I think it's going to be a great match. Any favorite player of the match for you, Hitvi? Well, I support South Africa. I'll go with Mitchell Stark again, my favorite from since IPL. So yeah, Mitchell Stark, I say. Okay. And any on the With batting fast. side? On the betting side, I'll have to look. So it's quite a very so Travis Head is there on the Australian side, Yes. and on South Africa I think Rickleton played well in the IPL. He's and Markram, of course. I mean, he's right there, right on top. So you want probably Rickleton and Markram to start well Markham, yeah. as a great on the opening side, and then you have of course Wayne Mulder and Bioma coming later. Tristan Stubbs played well in the IPL. I think he can accelerate the score when required, and also stay on the pitch. He's shown good temperament in the IPL. I think he didn't go out all the way hitting just an up and up. He was pretty balanced in his approach whenever he played. So I think that's a good. I would honestly think that there is a the spinners might just come in if the sun comes out and the pitch is dry, and then you might want them to play. So Keshav Maharaj is a great a resource for South Africa. He bowls very well, by the way. I've watched him earlier, and I think he played one IPL, I think, a couple of seasons back, and I've seen him in the World Championships, ODI and T20 playing, and he's fantastic on his good day. So I think there is a good chance of South Africa pipping Australia this time, just on form, because they have some great players sitting out there, and Usman Khwaja in Australia, and maybe Steve Smith a little bit out of practice. They haven't really performed well in the past 1 or 2 years, so they need to step up and probably do something out of the skin if they want to really want Australia to win the match. So let's see. Priya, whom would you want in from Australia, your favorite team, to perform for them Pat to win? I Cummins. think Pat Cummins, obviously. Yes, yes, Yeah, I Pat knew you would Cummins. say that. He's been your He's been my favorite he's always. been your He's favorite from guy. India. He's a good all-rounder. He's a Exactly. great all-rounder. I think he not only does he bowl well, Hmm. and he's coming in from a very high, because the SRH did not do well. The last three matches that they played, they beat all the qualifiers, and I think they beat Gujarat Titans. They beat I think Punjab, and they beat the other team, Bengaluru, I think. So it was a good ending for him. So he's coming out on a high, and he's going to come back with all full motivation out there. So he will be a key player, I think, because not only he's a good bowler, he's a good batsman, and his captaincy will obviously come into Yes. play. So let's hope for a good match, and let's hope for cricket to win the day. Any team can win. For us, I think Australia or South Africa, both are equally good. Both India of is not yes. playing. Others say India, but India is not there, unfortunately, this year. But for cricket, I think it's a great matchup, and it'll be a fantastic 5 days of super bowling, super batting, and super fielding out there. Yes, correct. So let's watch the match as it begins tomorrow on the 11th of June. तो देखते हैं और फिर लौटेंगे वापस रिव्यू के साथ। तो आते रहेंगे और प्लीज देखते रहिए।
सॉरी। हमारा प्लान है डेली रिव्यू करना, कि हम हर मैच के हर दिन के अंत में जो उस दिन को जो हुआ है उसका एक समावेश, उसका एक एनालिसिस आपको आपके सामने रखेंगे। और आगे चल के क्या होगा, नारायण पसारी भी ज्वाइन होंगे उस एनालिसिस में। तो जरूर देखिएगा, क्योंकि टेस्ट मैच में हर दिन रुख बदलता है, हर दिन द फॉर्च्यून्स फ्लक्चुएट एवरी डे, सो इट्स नॉट एज if one day Australia plays well, next day you could have South Africa playing well, and the end, and the suspense opens up only on the fourth or the fifth day. So it's going to be a great 5 days of cricketing, and so please do watch us. We will be coming to you with our analysis, and Hitvi and Priya will obviously be telling you everything that what happened on that particular day, and Narayan will come in with his analysis of what he thinks went wrong or went right, and what will happen on the next or the few following days. Yeah. ठीक, तो लौटेंगे जल्दी ही, देखते रहिए। और हमारा क्विज जो है वो अभी भी ओपन है, तो जवाब भेजते रहिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस, और जल्दी ही लौटेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. Thank you. आओ देखें क्रिकेट टीवी।